Building plan drawing. First, building area. Building area 40 into 30, 1200 square feet. बिल्डिंग एरिया। तो आपके पास अगर 30/40 अगर बिल्डिंग करने का ऑप्शन रहेगा तो आप ऐसे 3 बेडरूम का एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम मिलता है 3। उसके बाद एक कॉमन बाथरूम लैट्रिन, एक अटैच बाथरूम लैट्रिन रूम के साथ डोर T1, एक पूजा घर D1 and gate bedroom number 3, kitchen room, door stair up। उसके बाद हमें जो इधर देखिए, हम इधर विंडो क्रिएट किया है एंड वेंटिलेटर एरिया। थोड़ा सा कलर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो डिजाइन के अंदर क्या क्या मिलता है पहले हम सेटिंग करेंगे। तो इधर देखिए एक रेलिंग आपको इधर मिल जाएगा दिखने के लिए, फर्स्ट रेलिंग। बाकी जो चीज है इधर देखिए, हम जो ऐड करेंगे इधर 30 फीट 0 इंच एंड 40 फीट 0 इंच। तो टोटल आपको मिल जाए तो 1200 स्क्वायर फीट का डिजाइन। फर्स्ट इधर पोर्च प्लस पार्किंग, 7 feet 6 inch wide। okay, next bedroom 12 feet 6 inch 11 feet 0 inch। next master bedroom 12 feet 6 inch by 11 feet 0 inch W by C, and bathroom 4 feet 6 inch and 6 feet। next stair plus drawing plus dining hall, kitchen room। इधर कॉमन बाथरूम प्लस W by C, पूजा घर, sit out area। next bedroom 12 feet 0 inch by 11 feet 0 inch and sit out area 8 feet 7 inch into 8 feet 6 inch, 4 feet into 8 feet 6 inch। next kitchen room
8 feet 7 inch by 9 feet 0 inch and 7 feet 6 inch वाइड इधर ओपन स्पेस। तो देखिए आपका जो एयर वेंटिलेटर एरिया रहेगा, तो इधर हम दिखाएंगे पहले विंडो के साथ। देखिए जितना भी विंडो और वेंटिलेटर, तो हम आपको जो एयर इधर से पूरा इधर ओपन स्पेस मिलेगा पूरा एयर वेंटिलेटर के लिए। इधर डोर, इधर गेट, 8 feet 6 inch by 5 feet 6 inch, 16 feet 5 inch इधर पूरा डिस्टेंस, 8 feet 10 inch इधर से इधर तक, एंड 11 feet 6 inch इधर। ठीक है, तो मेजरमेंट इधर 10 feet 6 inch। तो डिजाइन कुछ टाइप का रहेगा। उसके बाद हम इसके अंदर कॉलम ऐड करेंगे। 3 feet 3 feet एंड 3 feet। ओके, इसको हम कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम तो हमें ऐड करना होगा इसके अंदर। थोड़ा सा हम कॉलम के पोजीशन जस्ट सेट करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 नंबर्स कॉलम। अच्छा, तो कॉलम तो इधर हमने क्रिएट किया है। इसके बारे में बात करेंगे। कॉलम 10 by 12 inch and wall 10 inch 250 mm wall। ओके, इधर अंदर वॉल 5 इंच वॉल। तो ऐसे करके हमने इधर डिजाइन किया है। तो टोटल बिल्डिंग का जो कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 लाख रुपीस प्लस आपको पड़ सकते हैं अगर आप अच्छे से घर बनाएंगे। तो आपको प्लान डिजाइन कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं।